इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए रमन एकेडमी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करता है। यह एक होलिस्टिक मॉड्यूल है जिसमें हम कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन में हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर बेस्ड पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन और सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। एस्पायरिंग ऑफिसर से इंटरैक्ट करते हैं, उनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर उन्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए फीडबैक देते हैं। रमन एकेडमी के मॉक इंटरव्यू सेशंस एस्पायरिंग ऑफिसर्स को रियल लाइफ सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट की करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, बायोडाटा और होम स्टेट की नॉलेज को चेक और अपडेट तो करते ही हैं, लेकिन उनका फोकस एस्पायरिंग ऑफिसर्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, मॉरल इंटीग्रिटी और लीडरशिप स्किल्स पर भी होता है, जिसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट के साथ पर्सनल इंटरेक्शन किया जाता है और मॉक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है, ताकि कैंडिडेट फाइनल इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सो इफ यू आर सिंसियरली प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, I welcome you in this endeavor and assure you that together we can. धन्यवाद। जय हिंद। Please introduce yourself. So my name is MOHIT. I'm basically from Shimla, Himachal Pradesh, from where I have done my schooling. I've done BTech in Civil Engineering from NIT Himachal. Presently I'm working with HPAS Limited as Deputy Manager. I like cooking. Your surname is Shukla. Yes, sir. And meaning of Shukla is? So Shukla basically means white, sweet. Shukla is our Gotra, and from our Gotra surname is Shukla. Oh. You have written that cooking is your hobby. Yes. Your favorite dish? So I like to cook rajma. Rajma. Dishes. Serving soup in the starting and dessert in the end. Why it is done? So soup works as an appetizer. So it वो आपकी एक तरह से भूख को खोलता है in the beginning, and sweet dish at the end. I guess it's like it makes the food complete. Okay. So you are telling you like rajma. Yes. Any historical facts about rajma? So rajma has different varieties. In Himachal itself, in Kinnaur region, you will find various types of rajma, and this is all I could recall as of now. Okay. So Mohit, can you tell me why Western and Chinese food are getting popular in India, but Indian food is not becoming popular in Western countries? Any reasons? So Western and Chinese food is getting popular in India. The reason being, they bring the taste which the food actually has, and more people are coming to India and preparing Western food. Whereas in case of Indian food, very less people are taking an initiative to prepare actually Indian food and putting an Indian content or context to it. So the flavor, I guess, is missing in other countries. Not any Indian is not basically is willing to bring that flavor in that food. If that's In food, adulteration is increasing. yes. Right. So what is government doing for that? So government has a body, Food Safety and Standards Authority of India, that is responsible for promoting food health. It regulates and oversees the various qualities which are expected of, or which as per under the rules and regulations prepared by them. Okay. So I mean, recently there was a food park opened by Kremika where? So Una. Okay. So what is the importance of food processing industry for state like Himachal Pradesh? So state like Himachal Pradesh has very less avenues for revenue generation. The land per farmer is very less. So there is a very important need to go for food diversification or diversification in agriculture. Food processing industry is very lucrative industry, and it brings a lot of revenue to the state and to the farmers.
various food processing products, which HPMC is going for food processing products. Various individual retailers or traders are going for. It brings them a very lucrative price and adds revenue to the state, and it's in line with Prime Minister Narendra Modi's dream of doubling farmers' income by 2022. There are many traditional dishes that are dying. What are the reasons behind their extinctions or the dying out? The reason being the dishes are dying is there is no proper literature or documentation of the dishes. Had there been proper documentation or some kind of digital library where the dishes have been published or kept as a resource, they wouldn't have died, I feel. How malnutrition in India can be tackled? So, malnutrition is a very serious problem in India. According to a global nutrition report by World Health Organization, India has largest number of stunted and wasted children in the world. In order to tackle malnutrition, strict steps have to be taken, which includes both regulatory measures as well as monitoring and inclusion of NGOs or voluntary organizations to directly attack the root of this problem. Some of the steps taken by government are midday meal scheme, Poshan Abhiyan, Integrated Child Development Scheme, and National Food Security Mission, etc., which are the steps in right direction to tackle the malnutrition. And recently, Niti Aayog has come up with a strategy to eliminate stunting by 2022. Okay, so you are from Kangra. Yes, sir. Recently, some meet happened in Kangra. Yes, sir. Global investors meet. Okay. The aim of the meet is to bring investment in India, in Himachal Pradesh, which would benefit the state and also the local youth of the state. It would bring investments along with employment opportunities and development in the state. Can you name the focus sectors? There are Focus sectors were IT, pharmaceuticals, agriculture, horticulture, hydropower, and tourism. Okay. And what positive impact will it have on industrialization in Himachal Pradesh? Sir, if implemented, it would bring a lot of a tremendous change in the state in terms of revenue, and if more and more industries would come in the state, the youth would get more employment opportunities. There would be less out migration from the state, and moreover, it will add to the revenue of the state. Okay. Have you heard about Janmanch? Janmanch, yes, sir. Okay. Recently, Janmanch is being called Jhandmanch. Yes, sir. Now, why is it so? Sir, the purpose of Janmanch is to go to the people directly with the ministers and solving their problems. Jhandmanch, it's being called Jhandmanch. The reason being that a lot of money is being pumped into making arrangements for ministers along with their staff, and which is a pressure on the state exchequer, which is already under the burden of debt of around 50,000 crores. Okay. And I feel that in order to serve the ministers are using it as a platform to show their control over the civil servants by publicly naming and shaming them, and this is the issue. So, what is the procedure of holding a Janmanch? So the procedure is a Janmanch is organized at panchayat level, and all the ministers themselves visit the place, and all the civil servants who are serving at the place are present over there, and the ministers themselves listen to the grievances of the public, and they make sure that the grievances are solved on the spot. Okay. So, is it a populist measure? Or when they are bringing a real change, like you're saying, they're wasting money. So, should it be stopped? Sir, it's an innovative way, I feel, to solve the public problems by reaching out to the public directly. Yes, spending a lot of money on organizing Janmanch is somewhat burden on the state exchequer. What can be done is, the basic motto is to solve the public grievances. It can be done by other ways also. By They say it Sarkar Janta ke dwar. How? In other ways. So government is there for public only. They are there to serve public. Going to the public is one way to serve the public. They can take alternate measures like improving governance, transparency, bringing IT, information technology, which can serve the public, serve the purpose of the public. They won't have to go to the public, and public won't have to. So we should stop it, Janmanch, right?
and we should have a better some other form of IT intervention. That's what you're we saying. can think of. And we should stop Janmanch. Sir, Janmanch is not altogether a failure. They have been able to solve the grievances of public, as far as I know and as far as I have read. So stopping it altogether won't solve the purpose. It's good, like if the minister is himself taking an initiative to solve the public grievances by reaching out to the public, that's a good initiative. What can be done is the unnecessary spending on lavish food and all other arrangements for the. There is also a CM helpline. Yes, sir. You might have heard that Yes, sir. people are not able to solve their grievances on CM helpline because arbitrary answers are being given on the helpline. So isn't Janmanch a direct initiative better than that IT initiative? Sir, the difference between CM helpline and Janmanch is in Janmanch the minister is himself reaching out to the public, and in CM helpline there is IT intervention. The thing is, what can be done is the IT helpline can be reformed. They can even put down a time limit within which the complaint has been received and can be solved. This a little bit change can be brought about in that. You were talking about bringing IT. Have you heard any IT revolutions or steps that are being implemented in Panchayati Raj institution in Himachal Pradesh, and how far it has been successful? Sorry, sir, I don't remember. HIMSWAN, have you heard about it? Yes, sir. Any 5 projects being undertaken under it? Yes, sir. HIMSWAN stands for Himachal Statewide Area Network. The project aims at connecting the government offices at horizontally as well as vertically. The project was started from HP Secretariat. The various interventions under HIMSWAN includes connection between the government to citizens, government to government, government to businesses. That's all. Recently there has been Ayodhya verdict. Yes, sir. You might have heard that in an unprecedented move, Chief Justice of India himself have first convened a meeting with Chief Secretary of Uttar Pradesh and DGP of Uttar Pradesh, so that after judgment, riots can be prevented. Don't you feel that court are unnecessarily intervening in religious matters? Sir, Ayodhya issue is a very old issue, and it has led to various riots in India. And court has taken other measures also to solve the issue, like arbitrations and mediation among the parties itself. But that thing hasn't been able to solve the purpose, and that didn't come out to be protective. So the court in India is for interpretation of law, and the court has come up with I guess a neutral decision which is accepted by both the parties, both Hindu parties and Muslim parties. Basically, what is Ayodhya dispute? So Ayodhya dispute is a dispute about the land, basically, and secondly, whether the temple was destroyed to create a mosque in 1586 by commander of Babur. What do you think will be the implication of all this judgment? Implication of this judgment that you see? Sir, I feel, as our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi said, the judgment is towards unity and integrity of the nation, and it should be respected by both the parties. I feel the same. The judgment should be respected by all the parties, since India is already troubled with various other issues which has to be taken care of in the longer run. So fighting over the... Are you also aware that there are 12 more disputes? That will be not a precedent that first break a mosque, then there will be arbitration, then there will be a supreme judgment, and these 12 places will again reclaimed by a group of religious peoples. See, I'm not aware of those judgments. Things are happening. What can be done to revive that secularism, Vasudhaiva Kutumbakam feeling? What can be done? Sir, India is rightly called land of diversity, and we are united under a single flag. What can be done in such disputes is to take the various stakeholders under confidence and finding a just and sustainable solution regarding the same. This is the way we should deal with such problems in future. Okay, so Kashmir, we have heard the Kashmir issue, Article 370. So what are the benefits of dividing the state of Jammu Kashmir into 2 UTs?
So dividing Ladakh was demanding status of separate administrative unit since a long time. Since as Ladakh was a part of Jammu and Kashmir, it was it was somewhat suffering in terms of development and in terms of other benefits which they should have received well before. So dividing Jammu and Kashmir into two UTs, Ladakh being a separate administrative unit, it will bring development directly to the state, to the union territory of Ladakh, and more the government schemes would directly reach the people, and it will be towards the socio-economic development of the state. They have removed Article 35A. Yes, sir. Have you heard about Section 118? That is in Himachal Pradesh? Yes, sir. Okay. So, should it also be abolished? Sir, there is, first of all, I would like to tell you, Section 118 of Land and Tenancy Reform Act 1972 is different from Article 35A. In Section 118, even the bona fide Himachalis cannot buy a land if they do not have an agricultural land in Himachal Pradesh. Whereas in Section 35A, any outsider cannot buy land, and the residents of the Jammu and Kashmir, whom the state legislature consider they can only buy the land in Jammu and Kashmir. And secondly, in Section 118, if a bona fide Himachali or someone outsider who wants to buy land, he can apply for it, and the permission is being granted to them. Isn't the step of downgrading a state into a UT have made the people worrisome? Converting a state into union territory, definitely it has some implications, and yes, it's like a downgraded status. But in a longer run, if you would see, the benefits of government schemes and various development activities will reach to the people of Jammu and Kashmir. And I feel the people of Jammu and Kashmir are also supporting the step taken by government, because they are concerned about their development of their kids in the longer run, not about like a status. And moreover, our Union Home Minister Shri Amit Shah has said that over the long run, the status will be restored back to the Jammu and Kashmir. What are the problems that 370 wasn't serving as integration of J&K into India, and now the removal will serve? So first of all, the Article 370 was a temporary transitional and special status given to Jammu and Kashmir. The implications were Jammu and Kashmir had its own flag, separate flag, its own constitution, its own rights, which itself was against the unity and integrity of the country. Now the government schemes and benefits will directly reach the people and will uplift them socially as well as economically. Moreover, some of the laws like RTI Act were not directly applicable to Jammu and Kashmir. They had a separate Ranveer Penal RTI Act. And so now the thing is, whatever law is passed by central government will be directly applicable, and moreover the schemes, the development activities which government will moot or come up with will definitely reach the union territory Jammu and Kashmir. Recently, you are aware that there are dogmatic instances have been occurred in Sarkarghat region of Himachal Pradesh. Himachal being top in education, doesn't such situation show the apathy or the poor state of mind of people? So Himachal is among top literate states of Indian Union. The recent issue included 70 elderly lady was harassed by a mob on the suspicion of being a witch. Why is it happening? Why is it What might happening? have caused it? The reason being, yes, some of the backward districts or some of the backward regions of our state are into superstitions. So So Sarkarghat is high on education, high on job. You can't say it is a backward, but still pupils are in a mob phobia. So this should definitely not have happened. Secondly, Is it a law and order failure? sir, as far as I know, the case is the woman herself went to the police station and the police did not report her issue on the first instance. And yes, that was not correct in the first instance. Secondly, strict steps have been taken thereafter. Even our Honorable Chief Minister has ordered an inquiry, and around 10 to 12 people have been arrested in that case.
So in future, to prevent such situation, what should be done? You are made a DM. You're DM of a place. Such a situation happens. And what will you do to prevent such things in the near future? So first and foremost step which I would take is directly talk to the people, mediate in between, and find out the issue. What exactly the issue is? Because it's like a spark. Like if someone might have said that she's not normal, she's weak, and that spread like a spark. So the root cause of that thing could have been found out initially by mediation, and if not possible, I would mobilize my resources, which would include police, to take care of the situation. What inquiry should be initiated the police personnel who have refused to register the FIR? Sir, a committee should be set up to find out what exactly the issue was and where the police lag and what could have been done in that case, and its recommendations could be followed. Why drug menace is increasing in Himachal Pradesh? Sir, the basic reason of increasing drug menace in Himachal Pradesh is due to it's connected to the border areas of Punjab, Haryana, which gives a chance to the peddlers to enter Himachal Pradesh. Secondly, in Himachal Pradesh, in some regions like Kullu district, there is a cultivation of weed also, which gives an opportunity or gives a chance to the peddlers to come here and enter into drug peddling and earn illegally. Have you heard about Golden Crescent? So I'm not aware of it actually. Okay. I would recall. If you are made SP of a district which is high on drug trafficking, what steps will you take to curb the menace? So firstly, I'll set up a special task force of my most able officers. They will be allocated the task of acting on the peddlers. Firstly, secondly, I'll make sure that awareness is being raised among the students and among the parents regarding the possible mis-effects of drug abuse. Thirdly, I'll make sure that very frequent awareness campaigns are being organized in the district so that people get aware of the issues. Fourthly, I'll try to start a helpline for the district specifically, where people can lodge the complaints regarding the misuse or. Are you aware about the government initiative to curb the menace of drugs? Yes, sir. There is a helpline, Hoshiar helpline, where people can directly register the complaint. There are various other initiatives like Drug-Free Himachal. There a drug-free app also is being launched, and a student police connect one program which is launched to raise awareness among the students regarding the ill effects of drug management. US has an impact. United States of America, it has impact on the Pakistan, and it can influence it in the form of financial and military aid. Should we include US as a third party or any other interlocutor to bring peace between India and Pakistan on Kashmir issue? Sir, I think Kashmir is a issue which India also believes is a bilateral issue between India and Pakistan, and India is over a period of time has stood against any outside interference or outside mediation on the Kashmir issue. I believe the issue should be solved bilaterally and no third party mediation should be involved in this. What steps should be taken to improve India-Pakistan relationship? The steps can be enhanced through cultural cooperations, through soft power diplomacy. Cricket, Bollywood is a very good step to increase cooperation. Secondly, frequent bilateral summits or meetings could be organized between the two, where the different issues which concerning the both could be discussed. What is this Kartarpur corridor? So, Kartarpur corridor is a corridor connecting the border area of India and Pakistan. Kartarpur contains 6 religious sites, Dera Baba Sacha, and the corridor is a step in right direction to improve ties between India and Pakistan. So I guess it's one of the step in right direction to normalizing the relation between the two. What is trade war and what is its impact on global economy? Trade war is a situation
where a country imposes sanctions on other countries, which may include increasing import duties. The impacts of trade war has on other parts of the country may be positive as well as negative, because if a country stops, for example, if US stops the import of XYZ goods from China, other countries like India and other Southeast Asian countries get an opportunity to find the markets for their goods. Secondly, the FDIs which are being invested in those countries will be diverted towards the countries where political situation is. Give us some recent examples on this trade war. So recent trade war between China and USA. On the base, on what? Some products? Yes, sir. What were they? India, US? What were the issues? So India, US, China products. Not aware of the products. Overall, what is the impact of this trade war on the global economy? Is there a slowdown in the world economy? So of course there is a slowdown when the bilateral trade or multilateral trade stops and it decreases. Of course there is a slowdown in. What is the reason for the slowdown? The reason for the slowdown is inflation. Okay. A decrease in the value of the currency, Mm-hmm. which automatically leads to it's a cycle actually. When there is inflation, the cost of the loan will increase. The companies won't take the loan. The production or manufacturing won't take place, and automatically the GDP won't increase. And it will Everything has an immediate reason. What are the immediate reasons that are happening this time because of which economic slowdown is happening? So, one such reason may be the protectionist approach by right. US President Yes. Mr. Trump. What else? So have you heard about RCEP issue? Yes, sir. Why did India did not sign RCEP? So RCP stands for Regional Comprehensive Economic Participation. It's a regional grouping. If implemented, it will be a regional grouping of 16 nations, which includes 10 Asian and its 6 free trade agreement partners. It includes 50% of the global population and 30% of the world. India recently disagreed to join Regional Comprehensive Economic Partnership. The reason being, India had issues with few clauses. One was country of origin, secondly investment, thirdly services. The country of origin issue would lead to dumping of China's products directly or indirectly, directly from China and indirectly from other countries, which would pump Chinese products into Indian economy. Secondly, India being an Okay, agriculture. what is Naga Accord? Which one? Naga Accord. Naga Accord. Naga Accord, it's a issue which revolves around the state of Nagaland. The people or the group over there have certain issues which they want to be addressed by government of India. What is the issue? So I'm not aware. So Okay. What are the impacts of Brexit on India? Brexit, it is happening. So how it will impact India? So Brexit I feel Brexit will benefit India, since if there is a Brexit, if Britain exits out of the European Union, then India would get an opportunity to increase its bilateral cooperation in terms of trade with Britain, which would be beneficial in terms of economic development of both the regions. Okay, you are a civil engineer Yes. and working with SGVNL. Yes. Don't you feel that the carrying capacity of river basins have been compromised while assessing the capacity of a project? Isn't the carrying capacity of a basin dependent upon that how many projects are built in a span of 50 kilometer, 60 or 100 kilometer? Sir, the projects are being constructed. There are definite set of guidelines. Central Water Commission, Central Electricity Authority, they are responsible for developing hydro potential state. Yes, there are certain regulations which I will tell you. There are certain environmental regulations like a hydro project. If a company sets up a hydro project, he is mandatorily required to release a certain amount of water on the downstream, which would be which is required for ecological and sustainable growth of the region.
So I guess that is being worked out based on certain set of calculations about regarding the amount of water required downstream. So I think the steps are being taken in that. Okay. Direction. Isn't the large dams disturbing the fragile ecology and the rock underneath the rocks and destabilizing whole of this and inviting more future earthquakes? We are a seismically active state. Sir, reservoir-induced seismicity is being misjudged, or it's a very new concept. It's not. It's a new concept actually, and not much research is being done in India. Recently, I got a chance to attend a conference on reservoir and seismicity, which was organized by Centre.Book of Irrigation and Power. The experts considered various showcased various case studies. There is no direct relation between a reservoir construction and reservoir-induced seismicity as per various case studies. So it's not that if you construct a huge dam and that will affect the ecology or that will affect the geological formation in that year. Moreover, when a dam is filled, it will itself have a huge pressure of water from upward side, which will definitely not let the strains from downstream, from down the rock mass to come up, and it will act as a stabilizing force, not as a destabilizing force. We are making big dams. Yes, sir. Do we really need them? Or there are some alternatives? Of course, there are some alternatives. Firstly, I'll come up with necessity of big dams. Big dams mostly like Bhakra Dam. It's a multi-purpose dam. You need water for generating power, for supplying to the people, for irrigation, for drinking purposes. For that, you need a huge pondage because Bhakra Dam is catering to more than 3-4 states. Secondly, if you like the alternative in case of direct, like in case we only have to generate electricity, then the alternative we have is we can use dams with pondage. We can construct smaller dams, or we can directly there are dams with pondage and or without pondage. We can directly take the water from the river, flush it into penstocks and generate the electricity. This is the one case. And secondly, we can have a pondage of 3 to 4 hours depending upon the peaking, like to meet the peak requirements during early morning and late evening. What is the hydro potential of this state? So hydro potential of the state is 27,436 megawatt. Now how much has been harnessed? 10,547 megawatt. It's around 39%. Why you want to join civil services? So I have deep interest in civil services. Since my college days, I served as training and placement representative. I have helped various people in getting a job. And the work I used to do there used to give me utmost satisfaction. And I have been continuing this work of doing service or doing of helping people in one way or another. And I believe that joy of service is above everything for me. Okay. So civil services give me a diverse set of opportunities to serve the people on the grassroots level and myself see the results. Recently there has been amendment in RT Act. Yes. What are these amendments and how will they impact institution of CIC and state CICs? So the recent amendment is regarding the appointment of chief information commissioners and state information commissioners. Definitely, there is more interference of central government. There will be more interference of central government in appointment of information. While the amendments are regarding the term of services and about the salary, that has to be decided by the government. What are the issues? So Why I everybody believe, is discussing it that it's not good? Why people are opposing it? So RT Right to Information Act was actually the purpose was to bring about transparency in the system. So I guess the issue presently is the act is being opposed by people because they believe somewhere that the transparency will be sacrificed. Okay, you were a coordinator. For being a coordinator, what kind of qualities a person is needed or expected from? So a coordinator needs a good understanding first of all. Secondly, he must be able to communicate with the people properly because unless and until the correct information is being supplied to the people,
he won't be able to do the intended purpose. So coordinator requires these qualities: good communication skills, good understanding, and he should be able to convince the people. Okay. You are also TNP, Training and Placement Representative. So anything special that you did which created a change there? Not even I arranged companies, arranged the placements of my present batch. I even called the companies which came for our next batch also. I even get to hear from my juniors that the companies which we called or I called during my tenure, they came. No doubt they some of them didn't come for in our tenure, but they came in the next tenure. Himachal has large number of educated unemployment. What measures should be taken to cater the needs of these unemployed? So unemployment these days is a serious problem in India, and recently it rose to 6.1%, which was highest in 45 years. Himachal Pradesh is also suffering from this problem. Himachal Pradesh is basically agricultural economy. We have very less avenues for resource generation. What can be done is we could go towards diversification of agriculture, promote organic farming. Secondly, we could invest more in manufacturing sector and services sector, which has huge potential in the state. Around 70% of our hydro potential is untapped, and hydro sector has a huge opportunity in terms of employment generation for the local youth. Which could One be thing, when a hydro project is undertaken and constructed, no doubt that at time more workers are needed. But when a project is completed, the persons now employed are very less than what were earlier employed. Isn't it so? Sir, I'll tell you, the thing is, when a hydro project construction takes place, no doubt we require large number of workers. Once it is constructed, the auxiliary tasks are also being carried over in the region, like construction and maintenance of the colonies and various other facilities like What is Mission Indradhanush? Mission Indradhanush. I don't know. Sorry. Have you heard about rural tourism initiative in Himachal Pradesh? Yes. Can you tell us? So Himachal Pradesh has many untapped beautiful areas in rural areas, which has huge potential for tourism. So the government is making sure that those areas are tapped by various schemes like Nai Rai, Nai Manzil scheme. They are including the local people of the area in this by facilitating them to come up with homestays, and by learning about the culture and transmitting it or showcasing it to the tourists coming to the state. So it has huge potential. How is ecotourism different than the older form of tourism? So ecotourism is a tourism which is ecologically sustainable. That you go to the place, enjoy the beauty, learn about the place, and come back without having any impact on the environment. Earlier tourisms, the other forms of tourisms, conventional forms of tourisms, they were different because they had very less environmental aspect in them. Okay, what are good governance initiatives in Himachal Pradesh? Good governance initiatives in Himachal Pradesh includes HIMSWAN, CM helpline number. Thank you for remembering this question. You earlier talked about Prime Minister's vision to double the farmer income. Have you heard about zero budget natural farming? Yes, sir. And how is it different than organic farming? Yes, sir. So zero budget natural farming it is a concept by Padma Bhushan Shri Palekar and Subhash Palekar. The concept is different from organic farming because zero budget natural farming, as the name itself suggests, the farming includes zero budget. You have to make zero investments in the farming. It has its own principles which differs from organic farming, and the techniques which are involved in zero budget are different from that.
So zero budget natural farming would help in increasing the soil fertility, coming up with products which are organically pure and being sought after these days by the people, and it will definitely fetch better prices to the farmers, which is directly in line with government Prime Minister Narendra Modi's goal of doubling farmers' income by 2022. Your father was in bank. Yes, sir. What are the problems Indian banking sector in India is facing? Banking system is troubled with a huge amount of non-performing assets, which are around 10 lakh crores, which is a huge problem since if due to this huge NPAs, banks are not able to lend to the sectors which actually need the loans. Okay, NP then. Secondly, there is an issue of discipline Okay. in the banking system, and thirdly, the What is issue the discipline? What kind of discipline? People are not coming on time. is a corporate discipline, Okay. like doing the tasks like whatever they are They are not following the precedents or the rules. rules. Okay. Thirdly, Because of which what's happening? because which What is the implication if they are not following the rules? directly would lead to non-performing assets. They will be lending unnecessarily without taking care of all the rules and regulations and guidelines. Right. Second, then third. Then we fight for issues. Two. Banking sector is like it's facing the problem of shortage of staff and huge amount of work. There is demand supply imbalance between the staffs. Fourthly, the technical intervention. There is technical intervention, but the products are not lucrative to the public. So You have done your engineering from NIT Hamirpur. Yes, sir. Who was the founder of the state? And can you name 5 famous places in the district? Founder of state. State of Hamirpur. Hamirpur. As well. Okay. Hamid Chand Mhm. was the founder, and the famous places are Dyotsid, Avadevi temple. Can you tell us about Kangra painting? Yes, Details. yes. Kangra painting has received GA indication tag. It is a very delicate form of painting that revolves around the love stories of Radha and Krishna. Secondly, the unique feature about the painting is it's very natural. All the colors which are prepared, they are prepared very naturally through plants and the rocks. Thirdly, even the brush which is used is from the wings of a bird, which and the colors which are used to color the Kangra paintings takes around 8 to 9 months to actually to develop. So this is very unique that the painting is very natural, and the painting is very precise. And Can you tell us about Baramasa painting? Baramasa, Baramasa. I'm not sure. Why should we select you? What's so special in you? There are so many people sitting outside. Why you? Sir, I am working in SML Limited for more than 5 years. I have given my best over here, and I prepared along with that for the job. So that so I have good time management abilities. Moreover, I am ready to take up the task given to me on the field and themselves see the results. And thirdly, I can empathize with people, which I guess a civil servant is required to do. What is empathy? So empathy is putting yourself to the shoes. Or Give me an example how you can practice empathy, or you have practiced it till now. Sir, I have volunteered and even started a club, which is 1% club. I have gathered like-minded people of a company, and we contribute a little amount every month or in few months, which we use for the welfare of the people. Like recently, we contributed some amount to the Pradhan Mantri Relief Fund
for during the Balakot attacks. Secondly, we have contributed towards supplying tracksuits to a government school which is in the vicinity of our. If we select you, then what will be the first 5 measures that you will undertake? Sir, I have inclination towards social inclusion. So that will be my first will be my most important vision throughout my career. Secondly, second issue I'll take care of is environment. Thirdly, congestion in traffic. Fourthly, drug menace. And fifthly, the most important, I'll make sure I'll take steps to bring coordination in the department. You were born on 1991. Yes, sir. What are the major events that took place during 1991? So in 1991, there was disintegration of USSR into 15 units. Any major event in India? So I remember in 1992 I was there. LPG reforms? Yes. Thank you, Mohit. All the best. Good. जो मीठा होता है वो कंटेंट करता है, मतलब शुगर उसमें ज़्यादा होता है तो वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है, जो इसलिए जो डिज़र्ट होता है हमेशा लास्ट में दिया जाता है। और इधर बड़े वाला ठीक ठाक था। फिर एक आपसे पूछा था कि सरकार दैट इज़ अ फेलियर ऑफ पुलिसिंग डेफिनेटली। अगर पुलिस 23 या 24 तारीख को ही एक्शन ले लेती या एक राउंड अप करती गाँव का, तो वो सिचुएशन एस्केलेट ना करती और फियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बना रहता। मोरओवर इट वाज एस्केलेटेड विद आल्सो ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, तो क्योंकि उसकी जो लेडी की रियल बहन की बेटी, बहन का जवान, दे आर आल्सो अरेस्टेड। तो मतलब ये प्रॉपर्टी सिर्फ डॉगमेटिक या रिलीजियस इशू नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी इशू भी है। ठीक है, फिर सोशल कि अच्छा चलो इनका तो ये हो गया, बाकी लोग जो है दे आर इन्फ्लुएंस ऑफ द डेटी और इन्फ्लुएंस ऑफ द गूर, जिसको गूर बोलते हैं, जिसके अंदर दिखता आता है। तो उस तरह की उसके लिए एजुकेशन, मेकिंग पीपल अवेयर दैट आपके पास अगर दूसरे का इन्फ्लुएंस है पर दिमाग तो आपका सपना है। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा था कि ट्रेड वॉर एंड ग्लोबल स्लो डाउन, तो डेफिनेटली साइक्लिक है, क्योंकि ट्रेड वॉर के साथ साथ साइक्लिक एक प्रोसेस भी आता है कि अगर हाई जीडीपी जा रही है वर्ल्ड की और फास्टेस्ट ग्रोइंग उस पर रेट पे जा रही है, तो इसके बाद एक साइकिल स्लो डाउन का आएगा ही आएगा। फिर जो ट्रेड वॉर है वो रेट ऑयल प्राइसेस को भी इन्फ्लेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उससे जो इनपुट एक ऑयल लगता है ग्रीस इंडस्ट्रीज में, वो कॉस्टली होने की वजह से वो इनपुट भी कॉस्टली हो रहा है। तो कॉस्टली इनपुट मीन्स कॉस्टली प्रोडक्ट का कोई डिमांड नहीं होने की वजह से स्लो डाउन। इमीडिएट रीजन बता रहे हैं ना, आजकल क्या हो रहा है, सीरिया में बंदा हो रहा है, माइग्रेशन वाला इशू है, राइटिस्ट हो गया, लोग प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है। इमीडिएटली क्या हुआ कि ये हो गया, ठीक है ना, इमीडिएट वाले इशूज नहीं होता है। जो ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है इमीडिएटली क्यों आया, ना कुछ टिपिंग पॉइंट होता है ना, वो बताने चाहिए। नेक्स्ट था कि आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट, तो पढ़ा नहीं था है ना, वैसे ही बता रहे थे। टर्म्स ऑफ सर्विस एंड सैलरी अगर वो दोनों ही गवर्नमेंट के पास होंगी तो क्या होगा, सीआईसी और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है दे विल बी अंडर मोर इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि उनके टर्म्स क्या है वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पे है। तो ऑब्वियसली जो अर्लियर जो एक्ट था उसमें उनको मोर प्रोटेक्शंस थी, अब वो टर्म की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं अवेलेबल है, तो उस वजह से उनकी इंडिपेंडेंस जो है शक के घेरे में है। फिर हिमाचली लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली जो ये मीट हुई है, ट्रेड मीट हुई है, तो इसमें अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो उससे एजुकेटेड यूथ को ही हेल्प मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो एक रोजगार के एक पॉइंट बताने चाहिए थे, मीट के मेन पॉइंट्स क्या है। देखो तुम्हें ये नहीं बताया मूव्स क्या है, एक तो देखो है मूव्स, बट एटलीस्ट ये बताना चाहिए फोकस एरियाज क्या थे, 8 फोकस एरिया थे, बताना चाहिए। जैसे वो बोलोगे तो इसके मोस्ट चांसेस हैं कि वो जरूर कुछ उसको टच करेंगे। और थोड़ा सा ऐसा होता है कि जब एक आपने देखो एक पैटर्न होता है, क्वेश्चन एक चला है, अब आप हमको बाकी के क्वेश्चन बना के दोगे, तो आपने हमको यानी इंटरव्यू लेने वालों को लीड करना है। आप जैसे पहले भी इंटरव्यू दे चुके होंगे, जब जॉब लगे होंगे, तो इट शुड बी यूर मोनोपोली कि आपने इंटरव्यू कहाँ घुमाना है।
तो आप ऐसी चीज़ कोई टच नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है। आप उनकी तरफ ज़्यादा जाएंगे या उन फोकस को उठाएंगे जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, ताकि हम क्वेश्चन भी वहीं से बनाएं। जनमंच पे थोड़ा पंगा हो गया ना, जनमंच बिल्कुल उल्टा कर दिया। जनमंच अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है और ऐसा नहीं हर जगह चल रहा है। जैसे केरला है, केरला में हो रहा है तो उसको तो अवार्ड मिला यूएन की तरफ से, ठीक है ना, कि हाँ ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि लोगों के बीच आप जा रहे हो और उनकी ग्रीवेंस रिड्रेसल कर रहे हो। जैसे यहाँ पे जनमंच के लिए मोटे सरकार जनता के द्वार, ठीक है ना, इसकी टर्म और अच्छी चीज़ है। इवन सीएम ने बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं भी जाऊँगा और उसका एक प्रोसीजर है, जनमंच पढ़ लो, है ना, उसका सिस्टम होता है किस किस को बुलाएंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने ही वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट निकाला है जनमंच के ऊपर, इन्फॉर्मेशन पूरी है सारी स्टार्ट कैसे होगा, वहाँ पे लोग आएंगे, कौन कौन मैनेज करेगा। जनमंच पे हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ठीक है, अथॉरिटीज, उनके साथ डायरेक्टली ग्रीवेंस भी डिस्कस करो और ये बहुत अच्छा मॉडल है, ठीक है, इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड पॉजिटिव। और हाँ तो इट इज़ नॉट दैट कुछ कॉस्टली, इतना तो कुछ है भी नहीं, खुला ग्राउंड वहाँ पे होना चाहिए, ऑलरेडी वहाँ पे वो होंगे जहाँ पे रेस्ट हाउसेज होते हैं, लोग आ रहे हैं, ठीक है, और धाम होती है वो लोकली हो जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ ये था कि इसको पॉलिटिसाइज करने लगे थे तो बोलता कि स्पीच वगैरह छोटी रहेगी, 10 मिनट से ऊपर नहीं बोला जाएगा स्पीच, काम करो, तो वो सर जनमंच इज गुड। एक बार पढ़ना जनमंच का प्रोसीजर है, सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला टाइप का है ऑपोजिशन का। हाँ उन्होंने ऐसे ही बोला, पर्पस सॉल्व कर रहा पीपल। ड्रग मेनेंस में आप थोड़ा अवेयरनेस में ही रह गए थे। इनिशिएटिव बहुत सारे ले रही है गवर्नमेंट। 150 आईपी इनेबल्ड हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं सेंसिटिव एरियाज में। फिर नारकोटिक सेल्स बन रहे हैं। फिर एसएसबी को यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो हाई ऑल्टीट्यूड पे वो होती है ना, वीड ग्रो होती है, उसको काटने के लिए, उन सब चीज़ के लिए एसएसबी सशस्त्र सीमा बल वो यूज़ किए जा रहे हैं। मिनी मैराथन और चैप्टर आ गया है सिलेबस में छोटे बच्चों के लिए, वो इस तरह से। और मिशन इंद्रधनुष हेल्थ जो सेक्टर को टच कर रहा है, इम्यूनाइजेशन के लिए 7 डे है ना, 7 डिजीज के लिए एक इंद्रधनुष वो बैंकिंग वाला भी है। हाँ, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। एक तो नहीं वो है कि हेल्थ का है। जब मैंने ड्रग मेनेंस में आपको गोल्डन क्रिसेंट बोला था, ये ड्रग से रिलेटेड ही है। वो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रिसेंट है, ये क्रिसेंट शेप का बनता है इसलिए इसको बोलते हैं। तो इंडिया मतलब हमारी लोकेशन पास में है ना, पंजाब की पास में, तो वहाँ पे इजीली ड्रग ट्रैफिक हो जाता है। फिर पंजाब से हिमाचल, और ये क्रिसेंट ट्रायंगल आपका ट्रायंगल नॉर्थ ईस्ट साइड। नॉर्थ ईस्ट। और गुड गवर्नेंस में जो ये एचपी एसेंशियल सर्विसेज रेंटी एक्ट है, बाकी ठीक है। आज कॉन्फिडेंस भी आप बहुत, आई कांटेक्ट भी ठीक था। बस अभी स्टार्टिंग में एक बंदे पे जा रहा था, बाद में तो आप कर सबको करोगे अच्छे से। बीच में कट कर देते जब कोई आंसर बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, पता होते सारा बता गए, ठीक है, एक दो जगह ऐसा किया है तुमने ना, कुछ चीज़ ऐसे करते हो कि नॉट हैव हैपेंड, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, इट हैज़ हैपेंड। आई वाज आस्किंग अबाउट द रीजंस व्हाई इट हैपेंड। देखो ना क्यों हो रहा है, सोसाइटी में कुछ तो है। देखो कहीं पे रेप हुआ, हमें ये नहीं बोलना चाहिए ना रेप नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली वी नो रेप नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछ रहा था रेप क्यों हुआ, क्या ऐसी कंडीशंस बन रही है जिसकी वजह से रेप हो रहा है। अगर आप उसको नहीं केटर करोगे तो फिर आप सोल्यूशन नहीं दे सकते। जब भी बात कर रहे होते हैं हम पहली चीज़ बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ, और हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, ये इंडिकेट करने की कोशिश करिए कि क्या इशू क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। अयोध्या आगे क्या करें कि फ्यूचर में ठीक हो जाए, ठीक है। जम्मू कश्मीर अब कैसे उसको मैनेज करेंगे सही चले। ये देखो ठीक है, तुम्हें ये पता है अयोध्या में क्या क्या हुआ, सबको पता जजमेंट क्या है, लेकिन अब क्या करें कि वो ढंग से मैनेज हो सके, ठीक है, ये वाली बात थी। और रीजंस देना है ना उस चीज़ के। अब जैसे डायरेक्टली टास्क फोर्स, जब भी उसमें एक टास्क फोर्स बना दूँ और करूँगा तो ऐसा लगता है कि बहुत ही इसमें सुपरफिशियल आंसर है। आपकी पहले इशू क्या है, जैसे ड्रग का इशू बोल रहे थे तो क्या इशू था, कहाँ उग रहा है, ठीक है, उग रहा है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर बच्चे खा रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, और उसके बाद जो खा चुके हैं उसके लिए हम क्या करेंगे। तो डी एडिक्शन, ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स पे होता है। प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, वो देखो वो ऐसा हो क्यों रहा है। हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि बस ये हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, वो वाली बात है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, हिमाचल में इसके अंदर होगा, मतलब ZBNF उसके नीचे प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना प्रोडक्शन कम कर सकता है और सेम टाइम पे वो क्या कर रहा है इनपुट कॉस्ट कम कर रहा है, तो उससे जो है किसान बेनिफिट होगा, तो उसका इनपुट कम होगा।
इसमें डिफरेंस क्या बताऊंगा? इसमें ये है जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना, इसमें कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना है। ये मैन्योर भी हमारी लोकल काउ ब्रीड होगी उसका आएगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी इससे बाहर से इनपुट लग सकता है। बाहर से इनपुट लग ऑर्गेनिक सकता है। फर्टिलाइजर। हाँ, कई बार ना थोड़ा टाइम ले रहे होते हो आंसर करने में, सोचने में थोड़ा तो ठीक है, वो make up लगता है अच्छा, बट बहुत ज्यादा नहीं। कई बार ऐसा तो समझ ही नहीं आ रहा, और एक दो बार ऐसा हो कि दूसरे ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो इसलिए पूछ रहे कि तुम्हें लग रहा है कि बट तुम्हारा एक पैटर्न है, मुझे वो पता था, मतलब मुझे थोड़े पहले तो मेरे को भी आइडिया नहीं था, बट ऐसा हो ना कि एक दो क्वेश्चन के अंदर मुझे लगे कि इसको थोड़ा टाइम दो, उसके लिए ये तो यस बोलता है, ये आंसर करता है, ये सॉरी बोलता है, ठीक है, बट तुम्हारा सॉरी भी लेट आता है, और बोलो ठीक है, अच्छी बात है, गैप लेना चाहिए, बट बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कई बार ऐसे लगा कुछ जगह पर तुमने बहुत लंबा ले लिया, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा सा जल्दी बोल सकते हो नहीं आ रहा है, या फिर आ रहा है तो फिर ऐसा लगना चाहिए हाँ तुम बोलने वाले हो सर, लाइक दिस, अच्छा आप ये पूछ लो, अगर तुम्हें ऐसे भी ना टाइम चाहिए तो, क्योंकि अचानक से तुम्हारा आंसर आता है, तब रिलैक्स रहेंगे ना, उतना ही टाइम कम होता जाएगा। अब ज़्यादा स्ट्रेन रहेंगे तो फिर वो माइंड से वो निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डेफिनेटली तुम शायद पूरा आंसर बना के बोलते हो, है ना, पहले पूरा सोच लेते हो, फिर अच्छा इसमें ये बताऊँ, फिर बोलते हो, है, तो कई बार वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बाकी यू सी ना हाउ इट कैन बी मैनेज, क्योंकि थोड़े टाइम में हमें समझ आ गया था कि हाँ इसको टाइम दो थोड़ा। तो कांगड़ा पेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए था, कांगड़ा पेंटिंग क्या है, 12 मासा क्या है ना, और उसके अंदर फिर फर्दर हिस्ट्री का कजिन्स, अगर आपकी फूड और का मानी बड़ी मेन चीज़ आपकी वहाँ रखी। हाँ, वो गया था क्या बोलते हैं, सिड्डू मानी डिश है अच्छा, कांगड़ा मानी। रीजन में, महामानी जो थी, ठीक है। और सिड्डू, यार सिड्डू तो बहुत फेमस है, और सिड्डू को रिवाइव कर रहे हैं, सिड्डू तो ऐसे चला हुआ है अब दुकान में मिल जाएगा। दुकान हाँ, में अब थोड़ा कुछ ऐसा होता है ना। मोमोज को रिप्लेस कर रहा है सिड्डू। और यहाँ पे ऊपर जो है ना रिच के ऊपर लगता है फेयर, उसमें सिड्डू बट रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई ऐसा होता है जो सच में ट्रेडिशनल है और खत्म हो रहा है, तो सच में देखना पड़ेगा, है ना। पहले तो 5 ट्रेडिशनल डिशेस बताओ। बल्कि इसमें ये हो सकता है कि जैसे मीट की जो वेरियस फॉर्म्स होती थी ना कुकिंग की, वो खत्म हो गई है। हमारा यहाँ पहले खट्टा मीट बनता था, तो अब वो नहीं मिलता है, बनता ही नहीं है। थोड़ा नॉनवेज से बाहर ये थोड़ा अवॉइड, एक्चुअली पिछले बार थोड़ा नॉनवेज भी पकड़ लिया था, क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है नॉनवेज वाला हो, फिर वो वेज नॉनवेज पे वो कर देता है, फिर उसको कैसे मैनेज करेगा उसने ढंग से। मैं देखो, मैंने ये नहीं बोला मत करो, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि लर्न हाउ टू मैनेज दैट क्वेश्चन। मैंने जितने क्वेश्चन पूछे ना उस सब में मेरा कहीं भी ये पर्सपेक्टिव नहीं होता कि तुम उसको आंसर मत करो, बस मेरा ये पर्सपेक्टिव है मैनेज। और पेंटिंग के बारे में बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि कैसे बनता है, कलर्स क्या डिपिक्ट करते हैं, वो कृष्ण राधा का बेसिस गीत गोविंदम से लिया जाता है, ठीक है, नेचुरल कलर्स यूज कर रहे हैं, फिर उसमें बैकग्राउंड कैसे बनता है, लाइटनिंग का यूज, ग्रीनरी का यूज, मिनिएचर है ये, ठीक है, इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि एक जो ब्रश होता है ना बहुत पतला होता है, फिर उस ब्रश से लाइंस मारते हैं, उससे बनाते हैं। 12 मासा मेजर थीम 12 महीनों की 12 महीने की जो पेंटिंग्स होती हैं, मतलब हर एक सीजन को डिपिक्ट करेगी एक पेंटिंग इस तरह से। बाकी तुम्हारा देखो हाइड्रोग्राफ तो अच्छा है, मतलब कंट्रोल है। और यूएस, ये पाकिस्तान, वो ठीक किया तुमने, देखो नहीं हम जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में, मतलब मैं तो वर्ड्स डालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि तुम बोलो कि थर्ड पार्टी नहीं, और है थर्ड पार्टी, ठीक है, तुम्हें आइडिया था। नागा कोड पता होनी चाहिए, तो नागा कोड इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोकॉप पे और ज़्यादा पूछेंगे कि आपका जॉब उसमें है। वो थोड़ा सा केरिंग कैपेसिटी वाला मैं कंफ्यूज भी हो गया था कि मतलब मेरे को केरिंग कैपेसिटी वाला वो समझ नहीं आया, तो फिर मैंने उसको ऐसे रिलेट किया क्योंकि हम पानी छोड़ते हैं, उसकी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लिनिक बेसिस की वजह से कि एक प्रोजेक्ट है तो उसका साथ लगती इकोलॉजी पे इम्पैक्ट, क्योंकि अगर 2 प्रोजेक्ट नज़दीक हो गए तो वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करेंगे, मतलब प्रोडक्शन तो बिजली का होगा, पर सेम टाइम पे जैसे अगर 5 किलोमीटर के दायरे में मिनी प्रोजेक्ट्स या माइक्रो प्रोजेक्ट्स पहले बहुत ज़्यादा अलॉट हुए, बाद में कैंसिल करने पड़े इनको, तो वो क्योंकि कैरी कैपेसिटी को अफेक्ट करेगी। एक्चुअली एनआईए में आता है सर्वे ऑफ इंडिया पॉइंट्स देते हैं जब हमें 2 पॉइंट्स देते हैं, उसके बीच प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो जो अगला प्रोजेक्ट होता है उसमें मिनिमम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, उसको वहाँ से पॉइंट्स देंगे, तो वो काफ़ी होता है बेसिकली, मतलब एक साथ नहीं बनाते, डिस्टेंस के बाद पॉइंट्स देते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी में एज इन वाटर वाला रीजन है कि जो 28,000 मेगावाट थी ना, उससे वो रिड्यूस किया है उसको 24,000 मेगावाट की हुई है, वो इकोलॉजिकल उसी पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए वो तो। और एक कैरिंग कैपेसिटी जनरल टर्म है, एक हाइजीन, जैसे कि
इस एरिया में जितने रिसोर्सेज हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी और कितने लोगों को केटर कर कितने कर सकती सकती है। है वो नहीं समझ। पानी, बिजली, एक वो कैरिंग कैपेसिटी होता है कि रिवर की कैरिंग कैपेसिटी होती है जो कम हो जाती है, वो तो मेरे होता है सिल्टेशन, सिल्ट से भर जाएगा ना फिर रिवर, तो मैं उससे वो लेके चला गया था। वो ठीक है, इकोलॉजिकली एक जैसे एरिया की कैरिंग कैपेसिटी है उतनी ही रिसोर्सेज दे सकता है, उतने लोगों को केटर कर सकता है, वो चीज़। और जब भी बता रहे प्रॉब्लम सोल्यूशन है ना, वही था। और लास्ट में जैसे तुम बता रहे हो, तुम बड़े बड़े थीम्स बताए और ठीक है, बट हम चाह रहे थे इस जैसे ऐसी बात बताते हो कि थोड़ा एग्जैक्टनेस पे हो, जैसे हाँ ठीक है ऐसा करूंगा और इसमें मैं ये करूंगा, तो बोल रहे कि तुम क्या 5 चीजें करोगे अब, तो 5 चीजें क्या क्या कर सकते हो सकता है मेरे क्वेश्चन में थीम्स बोल दिया मैंने, बट फिर मैं ये सोच रहा था कि जैसे हम चाह रहे क्या करोगे, जब ये सब जगह मिल रही है तो थीम बता रहे हो प्लस एक एक्शन भी बताओ ना, जिससे लगे थोड़ा अप्लाइड एक्शन। प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन। हाँ, या कोई भी जैसे तुम कह रहे सोशल इंक्लूजन करूँगा तो क्या सोशल, जैसे कि क्योंकि सोशल इंक्लूजन तो बड़ी बातें हो जाती है ना, जो स्कीम्स है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे आप शुरू में, तो वो पहुंचे लोगों तक जो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में। एक सेंटेंस में उसका से कुछ फैक्ट देते हुए कुछ, और ठीक है ये अच्छी चीज़ होती है, कुछ बता रहे हो तुम्हें फैक्ट पता तो इंट्रोड्यूस कर दो, है ना। मालन्यूट्रिशन में तुमने किया था, अच्छा लग रहा था, है ना। एडल्ट्रेशन देखो कि क्या हो रहा है, कैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, फसाइसेस आ नहीं जा पाए, मालन्यूट्रिशन कैसे मैनेज करें, कैसे टैकल करें, और बैंक में कैसे मैंने पूछा था ना, बैंक क्वेश्चन था कि बहुत कुछ कर बैंक मित्र चला रहे हैं हमारे यहाँ पर, और बहुत लीड बैंक स्कीम किस किस के अंडर है, चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। हाँ ठीक है, बाकी देखो बहुत अच्छा कर रहे हो, एक चीज़ बैलेंस्ड लग रहे थे आज, और कॉन्टिन्यूटी में बोल रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, अच्छा लग रहा है, ठीक है, और सोच के बोल रहे हो, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी आज तुम ऐसे ना रेडिएंट कर रहे हो। पहले वाले इश्यूज मेरे को नहीं लग रहा है आज, ऐसा करोगे बढ़िया रहोगे, थोड़ी स्माइल कर सकते हो, अच्छा लगा है ना, एकदम कॉन्फिडेंट लग रहे हो। थोड़ा एचआर में फंस गया मैं, एचआर क्वेश्चन में थोड़ा सा जो विषय लग रहा है मुझे लगता है क्यों ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि मैंने इसमें भी डालने की कोशिश की। इसका बोल रहे कि जो एक पब्लिक लाइफ होती है, यू इंटरेक्ट विद पीपल्स, तो वो वाली मेरी जो ट्रेड्स है वो यहाँ पे कैटर नहीं हो पा रहे, वो यहाँ पे ये जो भी जॉब है, लोगों से मिलना, लोगों को हेल्प करना, तो यहाँ पे ये फुलफिल नहीं हो पा रही इस जॉब में। तो जो सिविल सर्विसेज है वहाँ पे मैं आई कैन इंटरेक्ट विद मोर पीपल्स, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा रहती है जो कि डायरेक्टली उनकी लाइफ्स को अफेक्ट करे, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा तरह का काम है, क्योंकि देखो वो तो तुम बोल नहीं सकते कि स्टेबिलिटी है, देखो वो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम ज़्यादा कमा रहे हो, कम होएगा तुम्हारा ना, ठीक है। एक जो आपने लास्ट पूछा था कि तुम्हें क्यों ले, उसका क्या आंसर वो तो हमारी स्ट्रेंथ्स है, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, वो थोड़ा सुपरफिशियल लग जाता है ना फिर, कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, तो थोड़ा देखो सुपरफिशियल ना बताना तो वही है, पर विद एग्जांपल बताना है ना, जैसे कि हाँ ठीक है, पीपल्स इंटरेक्शन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए और एक स्वॉट एनालिसिस कर लूँगा अपना। एक्चुअली मैंने बना के रखा है, पर मुझे उसको प्रेजेंट नहीं करने आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे तुमने बोला कि अच्छा मान लो मेरी क्या क्वालिटी है, बताओ मेरी क्या क्वालिटी है, कोई ऐसी तुम अपनी क्वालिटी बताओ। मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एबिलिटीज है। चलो एक सॉफ्ट स्पोकन है ना, मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ। Problem Whenever I interact with people, Patience. throughout the time, whenever I talk, I'll communicate. And I listen to people first, and I'm soft spoken, so it has helped me in this way. So it will be a positive point when I come to civil service. एक एग्जाम्पल के साथ मैंने अभी तक क्या किया, देखो एक एग्जाम्पल वहाँ से दिखाओ कि हाँ ऐसा मैं हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ और बस मेरे को ले लो। हम ऐसे बोलेंगे कि मैं कहाँ पर, जैसे माई फ्रेंड्स जनरली से दैट आई एम सॉफ्ट स्पोकन बिकॉज ऑफ दिस एंड इट हैज हेल्प्ड मी इन दिस वे। एक एग्जाम्पल के साथ बात वही करनी है, बट हाँ अगर तुम सिंपली वही एक होता है ना कि हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, नहीं आप ऐसे करो कि एक सिचुएशन से थोड़ी सी उस एग्जाम्पल के साथ जोड़ो उस वर्ड को, और ऐसे शो करो कि हाँ मेरे अंदर है कैपेबिलिटी, और कैसे मैं, या मेरे फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं, जैसे स्कूल में था टीचर्स ऐसा बोलते थे, जैसे ही मैं यहाँ पर हुआ हूँ, मेरी कॉन्फिडेंशियल, चलो इस ईयर तो मैं नहीं बताऊँ, बट जब मेरे को अप्रेजल किया तो उस टाइम पे ये लिखा हुआ था कि ये बंदा ऐसा है ना, कि मेरे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को उन्होंने अप्रिशिएट किया इस तरीके से, समझ रहे हो, कोई एक एग्जाम्पल देते हुए, और हाँ ऐसा मैं ऐसे करता हूँ, मतलब तुम टाइम मैनेजमेंट बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा कहीं पे अप्रिसिएशन हो टाइम मैनेजमेंट, या तुमने कुछ इन टाइम किया हो, एंड जनरली मैंने ऐसा किया तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लेवल पे अप्रिशिएट किया,
प्लस मैं इन जनरल टाइम मैनेज अच्छा करता हूँ क्योंकि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ ना, तो ये वाली ट्रेट सिविल आपके लिए लो। क्योंकि देखो अब ये क्वेश्चन था कि आप मेरे को क्यों लो, तो वहां पर सिर्फ वर्ड्स नहीं है ना, एक समझ लो हो पाएगा कि और एग्जाम्पल सब समझाओ, हो जाएगा ना। और हाँ इसमें आप कर सकते हो, जैसे जनरली फ्रेंड्स, जैसे मेरे मदर ऐसा कहते हैं मेरे बारे में कि तू ऐसा है ना, और मेरे को इससे बड़ा फायदा हुआ। नहीं तो फिर वही सॉफ्ट स्कूल में हो जाएगी ये तो नेगेटिव है, तुम्हारे तो लोग सुनेंगे नहीं, बट कैसे तुम उसको स्ट्रेंथ दिखा रहे, व्हाई इट इज माई स्ट्रेंथ, वो दिखाना पड़ेगा, समझो ऐसे। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ भी है और हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आई सर्व्ड एज कोऑर्डिनेटर, ये वाला ठीक है, मैं चलिए देखो, I served as a coordinator in Society of Civil Engineering NIT हमीरपुर, where learned। क्या आप IAS या HAS हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर की फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आपका भी नाम हो? अगर हाँ तो रमन एकेडमी का टारगेट IAS और HAS 2020 GS प्रीलिम कम मेन फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। At Raman Academy, it's not about outwitting the examiner. We promote crystal clear understanding of essential topics. And my friend, there is no shortcut. आपको जो भी essential topics हैं उनको in depth पढ़ना पड़ेगा, फिर current affairs से connect करना पड़ेगा और MCQ attempt करने पड़ेंगे और उसके बाद एक constant revision करते रहना पड़ेगा। And at Raman Academy, we are providing an enabling environment for this. फाउंडेशन कोर्स की सभी क्लासेस शिमला स्टडी सेंटर पर होंगी। डेली 4 क्लासेस होंगी। पहली क्लास करंट अफेयर्स की होगी जिसे मैं खुद कंडक्ट करूंगा और 3 क्लासेस सब्जेक्ट बेस्ड होंगी। डेली और वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होंगे और मेंस और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं उन पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ओल्ड स्टूडेंट्स जो दिल्ली या चंडीगढ़ से कोचिंग करके आ चुके हैं और स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले इंटरव्यू या मेंस अटेम्प्ट किया है और हमसे हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारी लाइब्रेरी में आके बैठ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इफ यू आर सिंसियरली प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आई वेलकम यू इन दिस एंडेवर एंड अश्योर यू दैट टुगेदर वी कैन। धन्यवाद। जय हिंद।